Done? Okay, so very good afternoon, everyone, and I wish you all a very happy Diwali festive season. So, we are here to understand how to start this subject called sociology. Since we know the subject has been very popular among students, so it is important to address how to really approach this subject, and not just how to approach the subject but also how to finish the subject, because it's easier to start the subject but it's very difficult sometimes to know where should we end the subject, where should we finish the subject, and how do we finish it. So regarding these two things, we have decided to conduct today's session: how to start and how to finish. I'll address both these questions, beginning with how to start. See, today we have ample number of sources available to start our preparation of sociology. Okay, there are some books available in the market. Okay, books like 𝐂𝐤, okay, and then there is a source called as Harlambus. So these are the most popular sources that we know so far: 𝐂𝐤, EPG Pathshala and Harlambus. Okay, now other than these sources, there are some old age sources like Ritzer, and some also talk about NCRT, right? And of course there are some toppers notes. Now what is happening is that most of the students directly are starting with toppers notes. Okay, see, it's very important for us to understand that even toppers did not rely on toppers notes, which means if there is a person who has cleared the examination, he himself never read his own notes, rather he made his own notes first. Okay, so it's important that we should differentiate between someone who has made his notes and someone who is reading someone else's notes. Okay, so we should remember that we should not directly rely on ready-made notes, we should make our notes first. And this is applicable not just to sociology, it is applicable to GS also. When we are reading Lakshmikant polity, okay, so we are not relying on someone else's notes on Lakshmikant, we are reading it all by ourselves, right? And that too when polity as a section carries approximately in prelims 20 marks weightage, and in mains approximately 120 marks weightage. So for 140 marks worth subject, we are reading a book called Lakshmikant. But for 500 marks worth subject, we should then be reading the same book only. So therefore, I would not advise people to go directly with toppers notes. Toppers notes are helpful only and only for revision. You can't expect to learn things first hand from the toppers notes. You can definitely expect to revise things, or you can definitely expect to add some things from those notes into your notes, but you can't make them your own notes and add something from other toppers notes. Okay, so this is one thing that should be very clear to all of us. Okay, so I would advise that when it comes to how to start sociology, we should start with books like 𝐂𝐤. Okay, and at the same time we should keep referring some online source like EPG Pathshala or Harlambus for the people who are
doing self-study, these three are the most important sources to understand things. Okay. Now the question is, how do we end this subject? Is this only about reading these books and then clearing the examination? No. Until we understand how to end, we cannot assume that our preparation is complete. So to know how to end the subject, how to finish the subject, we should have hold on three things. One is PYQ, previous year question. Previous year questions will tell you where do you stop reading books. जनरली क्या होता है, पढ़ते पढ़ते कभी कभी इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि हमें लगता है कि यार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी और टॉपर की कॉपी से ज़्यादा, शायद उसने ये चीज़ नहीं लिखी थी, शायद मैं वो लिख दूंगा, बिकॉज नाउ आई नो दिस थिंग विच नो बडी एल्स न्यू. ओके, बट द क्वेश्चन इज, आर यू अवेयर where would you use it, and are you really aware whether this has been ever asked or this has been ever required on your part to write on the examination paper? For you to have complete awareness on what you are reading is relevant or not, it is important that you go through previous year questions. PYQs, I would say, are not just helping you understand what are the questions asked by UPSC. I would say they are more relevant to understand the contemporary syllabus. Syllabus is not just what you see, it is also what it appears in the examination. And syllabus is very dynamic thing. It is not static. It is not those units and bullets which are given to us. It is actually those questions which are occurring every year. That thing can easily tell you the trajectory or what is actually going on in the mind of examiners. That is very important, and you must also know that examiners themselves do not refer syllabus as much as they refer previous year questions before they make next year question. ये टेंडेंसी हमारे स्कूल के टाइम से चले आ रही है. स्कूल्स में भी हमें टीचर्स बोलते थे पिछले साल के पेपर्स लगाओ. यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, वहाँ पे भी हमको कुछ लोग मिले, कुछ सीनियर्स मिले, टीचर्स मिले, उन्होंने कहा पिछले साल के पेपर्स देखो. क्यों टीचर्स, स्टूडेंट तो समझ आता है क्यों कहते होंगे, बट टीचर्स क्यों बोलते हैं पिछले साल के पेपर्स देखो? क्योंकि टीचर्स खुद देखते हैं. दे देमसेल्व्स सी previous year questions and then they make questions accordingly. No teacher can afford to ignore previous year question and give the question right away. Every question that is suggested by different teachers in panel are reviewed by different committee, and that committee would actually see whether this question can be asked to students or not only with the help of PYQ. They would have PYQ in their hands and they would see whether this kind of question can be asked. Has ever such kind of question been ever asked in UPSC in the past, or any question on this theme has been ever asked? So PYQ is important not just for us but for teachers also, the people who are setting the paper. Second thing which is going to tell us how to finish, which is very important, is understanding. Now what is the meaning of understanding? Understanding or clarity, conceptual clarity. See, suppose if I read a scholar called Durkheim, and if I have read his theory on religion, and if I have understood what this theory of religion is, should I then again read theory of religion from some other book? No. This will lead to duplication of work, and this may even lead to confusion in your mindset. You may start questioning your previous source. You may start thinking this source is much better than the previous one. To be very honest, the game is not in the source. The game is in the mind which is receiving the knowledge. If you are not processing the knowledge which is given in the source, and you are relying only on the source, then it is really harmful. For any student, it is important that he or she must process the information, and he or she must, after reading the
given page or after reading the given theory, he or she must close the book for a minute and think what exactly has he understood or what exactly has he read. Can he really explain the same thing to someone else? जो भी आप पढ़ते हो क्या आप किसी और को समझा सकते हो? क्योंकि आप मानो या ना मानो, कल को आपको किसी और को एक्सप्लेन करना ही है जब आप मेंस दोगे। तो क्या आप जो पढ़ते हो, क्या आप वो किसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या आप किसी रिक्शे वाले को समझा सकते हो जो आपने पढ़ा? वाई आई एम टॉकिंग अबाउट रिक्शा वाला? बिकॉज he does not know English. He does not know technical terms. He does not know, he does not have good vocabulary. But he does have what we call as mind. He does have consciousness to understand things. If you can make him understand things, that means you have understood the concept by yourself. But if you are not able to explain to him, then that means you have not understood the concept. And the moment you have understood the concept, at that point only you should know that you don't need to read any other source for the same concept. So understanding is very important. Good understanding can have a great, it can help you develop a great precision in your answer writing. So a good understanding can develop you a good precision in answer writing. And third thing which can help you decide whether you have finished the subject or not is your answer writing practice. PYQ, understanding, and then answer writing. So first thing is that you go through previous year questions so that you understand what is the boundary of this theme, what is the boundary of this unit, and then work on those concepts multiple times and work to an extent that you are able to explain the same to a rickshaw wala also. And the easier language you choose, the more is the chance for you to keep it in your memory forever. अगर जितना डिफिकल्ट लैंग्वेज आप रखोगे उतना ही चांसेस है कि आप भूल जाओगे उस चीज़ को, क्योंकि आप उस चीज़ को याद करने के लिए लैंग्वेज पे डिपेंडेंट हो। लेकिन जिस दिन लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट हो जाए उस दिन आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल निकलेगी. सो योर बेस शुड नॉट बी लैंग्वेज, योर बेस शुड बी अंडरस्टैंडिंग. तो PYQ से आपको रेंज मिल जाएगी, अंडरस्टैंड करोगे आप उन टॉपिक्स को, एंड देन यू शुड डेफिनेटली go for answer writing practice. Answer writing practice will help you understand how much time do you take. It will help you understand what is acceptable and what is not acceptable to examiner. हो सकता है हम बहुत चीजें पढ़ते हों लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्या ये चीज एक्सेप्टेबल होगी एग्जामिनर को. वो पता करने का तरीका एक ही है, दैट यू राइट अ टेस्ट एंड देन सी इट फॉर योरसेल्फ whether it is acceptable or not. And third thing which answer writing practice can help you deal with is develop word bank. वर्ड बैंक, इसका मतलब क्या होता है, हम चाहे जितना पढ़ाई कर लें हम सबके कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं
जो हमारी तैयारी में डेवलप हो ही जाते हैं। जैसे जब लोग जीएस पढ़ते हैं तो सबका एक वर्ड फेवरेट हो जाता है, वे फॉरवर्ड। ठीक है, वो दिमाग में रह ही जाता है, चाहे हम कुछ करें ना करें, एक चीज़ तो आती है, वे फॉरवर्ड लिखना है। ओके, ऐसा ही कुछ जब हम तैयारी करते हैं सोशोलॉजी की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, कुछ लिमिटेड वर्ड बैंक हमारे दिमाग में फॉर्म हो जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 वर्ड्स. Like when you will read sociology, you will uh, have a word bank consisting of words like integration, unity, conflict, consensus, exploitation, ruling class. All these are some of the words that you will often use to express yourself. And answer writing practice will help you consolidate these words in your mind. आप इनको भूलोगे नहीं फिर, क्योंकि अपना लिखा हुआ आप कभी भूल नहीं सकते, और भूल भी जाओ तो अपने लिखे हुए को ही अगर दोबारा पढ़ो तो मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहता है, बट दूसरे का लिखा हुआ और सिर्फ पढ़ा हुआ आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता. ओके, सो डेवलप अ वर्ड बैंक. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैन हेल्प यू डेवलप अ वर्ड बैंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन. और ये वर्ड बैंक आपको एक रेडीमेड स्टार्ट देता है, यू नो कि स्टार्ट कैसे करना है मुझे. ओके, and also with answer writing practice, which is the major thing, you will gain confidence. You will gain confidence. Okay, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस तैयारी में. हम चाहे जो कर ले, अगर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो हम खराब ही करेंगे. बट अगर हमने कुछ ज़्यादा ना भी किया हो बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है तो हम अच्छा ही करते हैं. ओके, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के पीछे किसी की फैमिली पोजीशन या बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है. उस कॉन्फिडेंस के पीछे आपकी अपनी मेहनत जो है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जितना ज़्यादा लिखोगे आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप उतना ही कम अपने सोर्सेस को एक्सपेंड करोगे. यू विल लिमिट योर सोर्सेस व्हेन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग. यू विल रियलाइज कि यार जब 2 और 3 ही पेज दिए जाते हैं, व्हेन वी आर गिवन ओनली 2 or 3 pages, how should then we afford to read more and more books? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करो. बिकॉज इमेजिन दैट यू हैव रेड समथिंग, ओके, एंड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट डे you are reading someone else's book or someone else's notes. Then you may start feeling FOMO, जिसे आजकल बोलते हैं fear of missing out. Okay, वो fear of missing out सच में आप ही का fear है या फिर created fear है, वो आपको realize होएगा जब आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे. when you will realize that with the help of your own notes you can safely address the demand of question, then you would understand there is no requirement for any other source, because the fact is sources would keep building up every year. उसको कोई रोक नहीं सकता है. ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सोर्सेज मार्केट में आते जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जब सोर्स नहीं थे तब भी लोग आईएएस बनते थे. जब इतने सोर्स नहीं थे, यानी कि सोर्सेज की कमी इज नॉट द जैसे कहते हैं फैक्टर दैट शुड प्रिवेंट यू फ्रॉम बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. बिकॉज कमी का मतलब क्या होता है? कमी एक तो होता है अंदर से, एक होता है कि मार्केट क्रिएटेड. अंदर से है या मार्केट क्रिएटेड है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे. जब आपकी गिवन नॉलेज से आप 2 पेज या 3 पेज एड्रेस कर पा रहे हो, देन डू यू रियली रिक्वायर एनी अदर सोर्स फॉर दैट? नो. और अगर आप सेफली PYQs भी कर पा रहे हो, अगेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी सोर्स लाइक दैट. ओके, सो these are the basic points that we should understand. Now coming back to the basic sources once again, I talked about some of the books like IGNOU, EPG Pathshala, Harlambas, Ritzer, NCERT, Topper's Notes. Out of these, the first thing that we should begin our journey to sociology, I would say, that would be IGNOU first. Okay, but IGNOU में क्या पढ़ें?
In IGNOU, there is a chapter on origin of sociology. You should safely start with that chapter, origin of sociology, because this chapter will tell you many things which are generally not given anywhere else. It will help you understand basic things like Renaissance, Enlightenment, Scientific Revolution. ये वो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने बचपन में बहुत सुना था लेकिन कभी हमने समझा नहीं शायद प्रॉपरली, लेकिन इग्नू की इस बुक के अंदर इन वर्ड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज ईच कीवर्ड हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी. So you should know, and there are people who believe that there is no difference between Renaissance and Enlightenment. Okay, so you would come to know when you would read this book how these two are different from each other, and these are the things that we should have clarity on, because यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है. अगर हमारी शुरुआत में ही हमारी क्लैरिटी कम होगी या मिसिंग होगी तो हम कभी भी अपनी जर्नी कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी तैयारी को स्टेप 1, जिसे कहते हैं गाड़ी जब चलाते हैं तो फर्स्ट गियर से ही शुरू करते हैं आपकी ट्रेनिंग. यू डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विद फिफ्थ गियर. तो कुछ ऐसे ही मान लो कि व्हेन यू आर स्टडिंग सोशियोलॉजी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग सोशियोलॉजी प्रिपरेशन, यू शुड हैव अ स्मूथ जर्नी. एंड इग्नू का ये जो चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, दैट विल हेल्प यू अलॉट, एंड यू कैन सप्लीमेंट द सेम with the help of NCERT. Okay. Now, what next? You can't afford to read IGNOU और NCERT cover to cover. Cover to cover का मतलब होता है कि आप पेज पलट पलट के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है ना, हमारा सिलेबस किसी एक बुक के हिसाब से नहीं बनाया गया है, और इसलिए हमारे सिलेबस के हिसाब से कोई बुक नहीं है जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ बताए. सो इसलिए आप शुरुआत जो है आपकी यूनिट 1 की वो आप इग्नू से करो, लेकिन आगे कैसे जाना है वो आपको समझ आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके PYQs देखकर. फॉर एग्जांपल यूनिट 1 के अंदर कुछ यूनिट्स दे रखे हैं, कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी कंपैरिजन हो गया विद कॉमन सेंस. ये सब चीज़ें आप जब कर लोगे PYQs देखकर तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका ये यूनिट पूरा खत्म हो गया. अब जैसे आप यूनिट 2 पे जाओगे, सोशियोलॉजी या साइंस, ऐसा आपको रेडीमेड अवेलेबल कोई यूनिट नहीं मिलने वाला इन इग्नू. प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती है कि इग्नू आपको कहीं तो सपोर्ट कर देगा, बट कुछ कुछ यूनिट्स में वो गायब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि फिर आगे अप्रोच कैसे करना है. एंड देयर कम्स, आई वुड से, द रोल ऑफ क्लासेस. What is the role of classes? In classes, what happen is that we go unit by unit, and in the whole journey of going from one unit to another unit, we will also cover PYQs. So something that is expected of you individually, that we will be doing in the classroom. यानी हम क्लासरूम में जब भी यूनिट ख़त्म करते हैं तो हम PYQs को सबसे पहले करते हैं, एंड साथ के साथ हमारा फोकस होता है आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इन आवर क्लासेस वी हैव आल्सो इंटीग्रेटेड PYQs and test series. These two are the most essential things that you must have: PYQs and test series. And these two are part of our foundation classes. Once you have gone through these things and you have competed against many of your students who are there in the class, then you will realize the competition, and then you will come to know. Every year what happens is, like in my batch, I see the toppers are not someone who are coming from any outside location which is not known to anyone else. The toppers are also from amongst us only, and they appear to be very casual. They may not even ask many questions in the classroom. They may sometimes sit in the back bench, sometimes they may sit in the front bench. Okay,
but they would understand the things, whatever is required. They would go through PYQs and they would perform in the test. And every time a test is performed, we release a list, and that list helps you understand where do you stand in the competition and what things do you need to work on in order to secure a good rank even among 100 students. Because यहाँ तो 100 स्टूडेंट से कंपटीशन होता है, लेकिन उधर तो आपका कंपटीशन जो है कम से कम 5000 से होगा. तो आपका तो कोशिश होना चाहिए 100 में तो मैं कम से कम टॉप 10 में रहूं, राइट. आई कांट से कि सब टॉप 10 में रहे, वो नहीं हो सकता है. नंबर अगर देखें न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट 100 स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग एंड all the 100 are in top 10. That is not going to happen. Competition is ingrained part of this preparation, so you will have to accept that you may see yourself going down also sometimes. At the same time, you may also see sometimes going up. Your attempt should be to move up always, climb up the social ladder. Okay. And see, जैसे स्टॉक मार्केट जैसी एक चीज होती है, वो भी ऊपर जाती कभी नीचे जाती है, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन है, कभी वो भी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी. और नीचे जब जाती है इसका मतलब क्या कि अब तो ऊपर ही जाना है. तो नीचे जाने पे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है. जैसे मार्केट में बोलते हैं कि व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग डाउनवर्ड ट्रेंड इन द मार्केट, दैट इज नॉट द राइट टाइम टू एग्जिट द मार्केट. इनफैक्ट दैट इज द टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट. सो व्हेन यू आर फीलिंग demotivated, stay there, because you have also experienced the same stage which toppers might have experienced in their lives. तो आपको वहाँ रुकना है और आपको पेशेंस रखनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे विश्वास रखना है, अच्छा स्कोर करना है. एक वही चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस दिला सकती है, आपको एक मोटिवेट कर सकती है. कोटेशंस और थॉट्स हमें थोड़ी देर के लिए शायद टेम्पररी हमें मोटिवेट कर दें, बट अच्छी मोटिवेशन परमानेंट जो हमें कैरी करेगी आगे के टाइम के लिए, वो होता है हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है हमारी क्लासेस में. एक तरीके से ये मिरर आप समझ सकते हो इसको, स्पेशली तब जब दीज टेस्ट्स आर regularly supervised by me. I am the person who is going to see who is performing at what level, and my task is to ensure that students who are performing good, they see they see themselves in the final list. Just because it is very important for any teacher to understand कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जितना टीचर उसके ऊपर काम करेगा उतना ही टीचर का भी फायदा होएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके. सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी उतना ही फायदा है. तो हम सब यही चाहते हैं कि यार जो भी बच्चे आते हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड PYQs is something that we do in the classroom only. And how do we do PYQs? We do PYQs through daily answer writing. Which is not really happening daily, to be very honest. ये होता है 3-4 दिन में एक बार, क्योंकि you can't expect to start answer right from day 1 and carry on till day 2 and number of day. It happens in phased manner. So like every week you can expect to write approximately 3 to 4 answers in the classroom. And ये ज़रूरी है कि जिस दिन आपने चीज़ों को समझा है आप उसी दिन लिखो, ना कि अगले दिन या 2 दिन बाद. हमारे जैसे कहा जाता है, सारे सेंसेस जब तक एक्टिव नहीं होते ना, या एक्टिवेट नहीं होते, तब तक कोई चीज़ ना हम फुली ग्रास्प नहीं कर पाते. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो और आप उसको राइट कर रहे हो, यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स ऑल्सो डिक्टेटेड टू यू बाय द टीचर, एट द सेम टाइम आप अपने आप को टेस्ट भी कर रहे हो. क्योंकि वाइल टेस्टिंग nobody is telling you what to write, you have to decide what to write. एंड तब जाके आपके सारे सेंसेस आई वुड से एक्टिवेट होते हैं और तब जाके कंप्लीट पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है. आप खुद से डिसाइड करते हो ये चीज़ मुझे लिखनी है, ये चीज़ मुझे नहीं लिखनी. ओके, सो दिस इज अबाउट द रोल ऑफ क्लासेस. नाउ व्हेन इट कम्स टू द पार्ट कॉल्ड एज पेपर 2,
कई स्टूडेंट्स को पेपर 1 और 2 में एक डिफरेंस दिखता है कि पेपर 1 जो होता है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, एंड पेपर 2 लोगों को लगता है कि इट्स वेरी जिसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी, विच इज नॉट द केस. As I told you, there are some things which you would realize all by yourself, and there are few things which are market driven, market created. Okay. Again, if you go through PYQ and if you go through last year's paper only, you would see paper 2 consisted of all the static questions. There was nothing which was never asked by UPSC in the past. PYQ ही है सब कुछ जो हमें बताता है साफ साफ, और आपको लगेगा देखकर सब कुछ PYQ based. And this is not the case just with optional. It happens with GS also. जीएस में स्पेशली 2 और 3 में बहुत रेपिटेशंस होते हैं क्वेश्चंस के. सो अगर पेपर 1 और 2 अगर आप पीवाईक्यू बेस रखोगे तो 2 इज नो डिफरेंट फ्रॉम 1. 2 की अगर हम बात करें तो डिफरेंस सिर्फ 2 ही चीजों में आता है. सबसे पहला डिफरेंस आता है आपका in terms of application. It's more an application of paper 1. And secondly, in paper 2 you are reading Indian society specifically, you are not reading any other society. Anyhow, even in paper 1 we are not reading all the times European society, we do read Indian society also in paper 1, because even in paper 1 they ask questions on Indian society. तो एज आई सेड सिलेबस एक तरफ, लेकिन पीवाईक्यूज हमें ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं. जब पेपर 1 के अंदर में भी इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगता है कि 1 और 2 सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का डिमार्केशन है. दैट इज़ नॉट द केस ऑल द टाइम्स. सो इट इज़ मोर अबाउट इंडियन सोसाइटी. एंड ट्रस्ट मी, टू डील विद दिस पार्ट you should have a great hold on section A. There are 3 sections in paper 2, A, B and C. पेपर 2 अच्छा उसी का होगा जिसका सेक्शन A अच्छा है. जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो तभी आपकी जर्नी अच्छी होएगी. ओके. और सेक्शन A आपकी शुरुआत करवाता है पेपर 2 की. सेक्शन A is also very theoretical. In section A, you would read again Marxist perspective, Indological perspective, structural functional perspective, and these are also very theoretical things. और आप ये नहीं अज्यूम कर सकते हो कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में आपको कार्ल मार्क्स लिखना है. There is a scholar called A.R. Desai in paper 2. आपको उसकी बातें लिखनी है. But in case if you have not read A.R. Desai and you decided to write Karl Marx there, it will not fetch you marks because other students are writing A.R. Desai. So it is important that we have good hold on paper 2 equally, क्योंकि वो भी 250 मार्क्स का है. और कई लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं पेपर 2 को पढ़ते टाइम. रीज़न बीइंग पेपर 2 बाद में शुरू होता है आफ्टर 3.5 months. तो 3.5 months के बाद स्टूडेंट्स के अंदर पेशेंस लूज हो जाती है नेचुरली, और कई लोग खुद ही केयरलेस हो जाते हैं. कभी क्लास आते हैं, कभी रेगुलर होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी टेस्ट देते हैं, कभी नहीं देते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जितने इंटरेस्ट से पेपर 1 पढ़ा है आप उतने ही इंटरेस्ट से पेपर 2 पढ़ो. दोनों ही 250 मार्क्स के हैं. ऐसे मान के चलो दोनों अलग जीएस के पेपर्स हैं. आप नहीं अज्यूम कर सकते कि आपने जीएस 2 कर लिया तो 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. वैसे ही अगर आपने पेपर 1 कर लिया है सोशो में तो पेपर 2 को भी आपको उतना टाइम देना पड़ेगा. बट येस, फैक्ट इज that paper 2 does not take that much time which is taken by paper 1. paper 2 के completion में approximately 1.5 months it will take you, whereas paper 1 के completion में it will take you 3.5 months. that means total 5 months का एक पूरा कोर्स होता है जिसमें मैक्सिमम टाइम पेपर 1 का होता है. क्यों? क्योंकि पेपर 1 बिल्ड्स योर फाउंडेशन. इट्स लाइक कि ABC जब आप सीखते थे बचपन में तो दैट वाज मोर टाइम टेकिंग देन अंडरस्टैंडिंग
एप्पल क्या है, ओके, ए फॉर एप्पल जानने में ही आपको रटने में टाइम लगा था, लेकिन एक बार आपने एप्पल समझ लिया, अब आपको एप्पल समझने के बाद वापस ए पे नहीं जाना, अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल समझने हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ एप्पल समझने हैं, लेकिन ए बी सी में एक्चुअली में टाइम लगता है। तो वैसे ही पेपर 1 में जब आप सीखोगे कार्ल मार्क्स को, डर्कहाइम को, वेबर को, तो इट विल टेक यू टाइम, क्योंकि ये आपके सीधा थिंकिंग को चैलेंज करते हैं। जो चीज़ें हमने आज तक देखी हैं उससे कुछ अलग वो हमें बताने की कोशिश करते हैं, और वो समझ आ जाता है बहुत जल्दी, लेकिन ना एक्सेप्टेबल नहीं होता एक सेकंड के लिए। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है, ऐसा कैसे मैक्स वेबर ने ये कह दिया, ऐसा कैसे कार्ल मार्क्स ये कह सकता है। वो एक्सेप्टेबिलिटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू टेक द वर्ल्ड विच इज स्टडीड बाय यू एज अ लेबोरेटरी, डोंट टेक इट बाय हार्ट। जब आप सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ते हो तो आपको इमोशनल नहीं रहना है, आपको कंप्लीटली, जिसे कहते हैं, एक नेकेड आई से पढ़ना है। नेकेड आई का मतलब ये हुआ कि कोई फिल्टर नहीं है, आपने आपकी जो भी आपकी अपब्रिंगिंग रही है अभी तक वो सब फिल्टर्ड है कहीं ना कहीं, आपके पास अपने कुछ बायसेस या ओपिनियंस हैं हर चीज़ को लेकर। वो बायसेस और ओपिनियंस को हटाकर आपको वो चीज़ को पढ़ना है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट टेक्स टाइम। उन फिल्टर्स को हटाने में और नए फिल्टर्स लाने में टाइम लगता है। दैट इज वाई पेपर 1 is 3.5 months long, but paper 2, by the time you read paper 2, you would have already gone through those basic things, and that is why it is going to take only 1.5 months. So total 5 months का आपका प्रिपरेशन रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस PYQs, टेस्ट सीरीज और ऑफ कोर्स गुड अंडरस्टैंडिंग पे रहता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, दैट you can start your preparation by reading basic books which I told you, and also by referring the classes which I just talked about. Our class is going to start from foundation class is going to start from 27th of November और टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग रहेगा 11 to 1:30 PM, 11 AM to 1:30 PM, 2.5 hour का मैक्सिमम टाइम होता है। एंड द क्लास विल बी अवेलेबल इन 2 modes, one is offline, pure offline mode, second is online mode. So those students who are not in Delhi, they can go for online mode, and students who are in Delhi, I would advise them not to go for online mode but to come in the classroom. ये टाइम जो है आपको रियलाइज ये करना चाहिए कि 27 नवंबर को अगर हम बैच शुरू कर रहे हैं, एंड इफ सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग ईयर प्रीलिम्स, तो आपको तो आपके पास चॉइस बहुत कम है। आपको अपने टाइम को मैनेज इस तरीके से करना है कि आप अपना कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सको। मार्च आई वुड से, क्योंकि मार्च में हम भी ख़त्म कर देंगे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक 6 days a week classes. We will not be having 5 days a week. We have decided to take classes 6 days a week, ताकि आपका कोर्स इजीली मार्च एंड तक खत्म हो जाए। एंड मार्च एंड तक अगर आप खत्म कर लोगे अपना सिलेबस, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 2 घंटे दिन के देने हैं सिर्फ क्लास में। एंड ट्रस्ट में आपको क्लास के बाद कुछ नहीं करना है, आप सेफली अपना जीएस को कंटिन्यू कर सकते हो। क्लास से पहले भी आपको कुछ नहीं करना, जो हम करेंगे हम क्लास में ही करेंगे, टेस्ट भी, आंसर राइटिंग भी और अंडरस्टैंडिंग भी। तो मार्च तक यू हैव टू मैनेज योर टाइम जीएस के साथ, बट आफ्टर मार्च आपके पास पूरा टाइम है। आपके पास मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने हैं, आप पूरा जीएस पे फोकस कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जीएस की नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए, यानी इसी महीने से। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं नवंबर से, उनको अपनी तैयारी तो शुरू कर लेनी चाहिए, जो नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक ऑप्शन नहीं किया है, उनके लिए आई वुड एडवाइस, दिस इज़ द ओनली टाइम।
इसके बाद तो ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन के लिए आपको सजेस्ट करेगा नहीं, एंड you can safely consider it as last batch for the coming session which is 2024. इसके बाद का जो बैच होएगा that will be for 2025, and we are also clearly stating the fact that this batch is not just a last batch for 2024, this is also first batch for 2025 students. So in case students who are appearing for 2025, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से अपने ऑप्शनल को क्लियर कर ले, मार्च के एंड तक ख़त्म कर लें, ताकि उनके पास बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम अवेलेबल हो फॉर देयर जीएस प्रिपरेशन. सो 2025 के लिए तो आई वुड से दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हैव, जैसे कहते हैं, हेड स्टार्ट इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स हु मे चूज टू स्टडी देयर ऑप्शनल आफ्टर द कमिंग प्रीलिम्स. तो आपके पास एक एज रहेगा कि आप बहुत आगे हो टाइम में उन लोगों से. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी in relation to preparation or this subject, you can ask me. Sir, your teaching and class information, thank you Miss Kutur. Vicky Ghosh, sir, should I start preparing for 2025 from now? Yes Vicky, as I told you, this is the time not just for students who are going to appear for 2024. This is also the time for students who are going to appear for 2025 attempt. उनके लिए तो डेफिनेटली इससे अच्छी हेड स्टार्ट नहीं हो सकती कि वो 27 नवंबर से ही अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हैं 2025 के लिए. और जितना पहले आप अपने ऑप्शनल को ख़त्म करोगे उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड आप फील करोगे, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट, आई वुड से ऑप्शनल is the only subject which takes sometimes one whole year of students preparation. कभी कभी पूरा साल ले जाता है आपका. तब खासकर जब आप बहुत सारे सोर्सेज पढ़ते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक फियर भी होता है मिसिंग आउट का. उस चक्कर में हमारे सोर्स, हमारे नोट्स, रजिस्टर सब कुछ एक्सपैंड होते जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता जाता है. इसलिए ज़रूरी है कि हम पढ़ें लिमिटेड, लिखें अनलिमिटेड, और PYQs को तो और भी ज़्यादा देखें. उसी से हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं. तो 2025, whosoever is preparing for and aiming for 25, I would say this is the best time. You can start from 27 November only. Batch will get over by the end of March. So 4 months में with 6 days a week classes, you can easily expect to have a good head start. Okay, next is yes Bhumi, 2025 attempt के लिए भी this is the batch. Abhishek, best teacher. Thank you Abhishek. Timeless Steel, sir, those who are taking coaching from somewhere else but want to join your test or guidance, any questions? Timeless Steel, those who want to join our tests, see, a test series is already available. There are 2 different types of tests which are available with us right now. One is Crash Course cum Test Series, and second is Test Series alone. And third, one more thing which I forgot to tell you is daily answer writing. Which we call as DAMP. So there are 3 courses going on currently. You can opt for any one of them. DAMP has started just today. Today only first question was released for students. This is DAMP 2. The DAMP 1 started last month only. The second edition started today only. First, and here we actually go by syllabus. We release questions according to syllabus. Unit 1, part A and B. So first question will be from Unit 1, part A and B. There will be 4 questions basically. 2 of them will be evaluated and 2 will be for your homework.
evaluation is done within 24 hours. Okay, so daily answer writing is basically going to help students who have um, done coaching from somewhere else and who might have done self study all by themselves, but they are not able to gain confidence. So answer writing can help them gain the same and to know exactly where are they going wrong, how many scholars to write, how many not. Okay. Test series is not like a daily answer writing program. In test series, you are writing 19 questions in 3 hours. Okay. Whereas damp, you are writing 2 questions according to your convenience. Although we prefer and we advise everyone to go strictly by time, adhere to time limit, and submit the paper once the time limit is over all by yourself, because we can't regulate people when they are writing daily answer back in their homes. We can't regulate. It is they have to regulate all by themselves. But in test series, they know that 3 hours is that sacred time limit that they can't afford to cross. So test series, I would say, is for those students who have completed the syllabus and who are just ready to write the answers. Daily answer writing is for those students who are in the process of completing the syllabus. At the same time, they want to check on all the things which they have done in the past. They want to really test them. So damp is for them. And crash course cum test series is basically a course for the students who don't just want to write test, but they also want to get their doubts cleared in the static part, which happens usually because by the time we prepare or by the time we finish our preparation, we have this much load of registers with us. हमारे पास 10 8 रजिस्टर होते हैं. ओके, नॉट विद आर केस. हमारा काम तो शॉर्ट नोट्स का ही होता है कि हम चीज़ों को शॉर्ट करें जितना पॉसिबल हो, क्योंकि PYQs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे. लेकिन यूजुअली लोगों के 7 8 रजिस्टर कंपाइल हो जाते हैं. इसलिए क्रैश कोर्स में क्या होता है, वो नोट्स जो भी आपके बने हो, कहीं से भी बने हो, वो छोटे हो जाएं, शॉर्ट नोट्स आपके पास हो, तो वो क्रैश कोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के साथ और कुछ हैंडआउट्स के साथ, एंड देन ये टेस्ट सीरीज वाला पार्ट इंटीग्रेट हो जाता है उसके साथ ही. ओके, so these are 3 different programs, and fourth is something which is launching on 27 November, which I just told about, foundation classes, which will cover all these things. It will include all these things, daily answer writing, and it will also have short notes and test series. Any other question? Sir, is it necessary to read Harlumbus and other books while doing classes? See, Rock, you don't require to read Harlumbus and any other book if you are doing classes. Why? Because in classes we are also making students write papers and go through PYQs. So this will automatically help them understand that those big fat books are not really so important, because आपको at the end of the day आपको 3 पेज या 4 पेज, अब तो 4 पेज भी खत्म हो गया है. There was a point of time until last year when UPSC would give you 4 pages for 20 mark question. इस साल उन्होंने 3 पेज कर दिया है. इससे पता चलता है कि द गेम इज़ नॉट अबाउट पेजेस. वो खुद परेशान हो गए होंगे शायद 4 पेज देके आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, when you know that you have to write 4 pages, sometimes you start with the irrelevant stuff, because आपके पास जो relevant है वो तो आपने लास्ट के लिए रखना है. तो कभी कभी हमारी स्टार्टिंग ही बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें 4 पेज भरने का वो होता है ना दिमाग में टारगेट. लेकिन इस साल 3 पेज कर दिया है. इससे पता चलता है कि सोर्सेज को आपको शॉर्ट करना है और आपको टू दी पॉइंट यानी प्रिसाइज लिखना है. अगर कोई आपसे पूछे कि कॉफ़ी शॉप कहाँ पे है, वेयर इज़ द कॉफ़ी शॉप, आप नहीं बोलोगे दैट द ओरिजिन ऑफ कॉफ़ी इज़ इन द कॉलोनियल टाइम्स विद प्लांटेशन इकोनॉमी. ऐसे नहीं, आप सीधा बोलोगे आगे से जाओ और राइट लो. वैसे ही जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सीधा सीधा बात करनी, आपको ओरिजिन हिस्ट्री पास्ट में नहीं जाना है. आज की डेट में यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोज ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन इशू. क्या ये इशू पहली बार हुआ है? ये हर साल की कहानी है, हर साल. बट यूपीएससी कभी पूछता नहीं है इसके ऊपर. ये सोचने की बात है कि इजराइल पैलेस्टीन इशू इज नॉट समथिंग विच इज न्यू. इट हैज़ बीन हैपनिंग एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ पैलेस्टीन एंड इजराइल. But still UPSC is not asking questions because it is not relevant.
And therefore to go into history and to read about how Israel got formed is waste of time, because first of all इंटरेस्ट एक तरफ और जो मुद्दे की बात है वो एक तरफ। हमारा झुकाव इंटरेस्ट की तरफ जब हो जाता है ना तो फिर हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। जब हम मुद्दे की बात पे रहते हैं तो हमारा भी फ़ायदा है और एग्जामिनर का भी, वो भी खुश रहता है आपसे और वो आपको नंबर देता है, क्योंकि वो समझ आता है कि इसको टू दी पॉइंट करने आता है बात, ये घुमाता नहीं। बट स्टूडेंट्स हु घुमाओ देयर पॉइंट, हु राइट द होल बैकग्राउंड एंड नैरेटिव, दे एंड अप लूजिंग देयर चांसेस। सो क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दैट वी हैव टू गेट मैक्सिमम अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर इन मिनिमम टाइम, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो तभी हो सकता है व्हेन वी आर स्टिक टू द गिवन डिमांड। ओके, लेट मी timeless steals and a little feedback regarding your website, sir. Sometimes really difficult to open and browse, gets hang or something I guess. Damn to pricing and overview please sir. Okay, so I'll definitely provide this feedback to our admin team. मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हूँ हमारी वेबसाइट से, मुझे समझ भी नहीं आता कई बार कि यार कहाँ पे कौन सा कोर्स क्लिक करना है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो स्टूडेंट्स तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना उनके लिए कंफ्यूजिंग होता होगा। वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं और ये फीडबैक मैं उनको एडमिन को ज़रूर दे दूंगा। और दूसरा जो आपने कहा कि डैम 2 का प्राइसिंग एंड ओवरव्यू, डैम 2 का प्राइसिंग जो है ना, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9500 समथिंग, बट अभी दिवाली का कोड चल रहा है, दिवाली 23, जिसमें आपको 23% ऑफ मिल रहा है। सो आई थिंक कट कुट के 7000 के आसपास हो जाएगा, 6500, आई डोंट रियली नो, बट आप उस कोड को यूज़ कर सकते हो। आई थिंक दिस इज टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर दैट कोड, दिवाली 23 का। एंड ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं डैम की, तो एज आई टोल्ड यू इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड डैम्प, you are given questions chronologically according to syllabus every day, okay, and this happens for 2 months. Paper 1 is for first month is for paper 1 and second month is for paper 2. In the first month you are tested on each and every bullet which is there in your syllabus of paper 1, and you are tested on PYQs also and some innovative questions also, and you have to submit 2 questions daily which we will be giving to you within 24 hours, and you will get evaluation within 24 hours. So it is going to regulate your daily answer writing practice, कि जो हम खुद से नहीं कर पाते वो एक एक्सटर्नल रेगुलेशन मैकेनिज्म आ जाता है आपके पास जो डेली टारगेट आपको देगा। ओके, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 2 full length tests other than daily answer writing. Sameer, sir, your class and brainstorm is sufficient, no book? Yes, no book is required. When I'm saying that these are some of the books which I just talked about, so I think I talked about few books like Harlambus, 𝐂𝐭 and some other resources. Now all those resources, if I talk about, they are for those students who are doing self-study. But the students who are with us, who are doing our classes, and this is not for advertisement, it is a fact that when we are in the class mode session, I make students write answer on previous year questions, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को मैं कई बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ है और लिखाई, जब मतलब हम दोनों को एक साथ यूज़ तो करते हैं पढ़ाई लिखाई, लेकिन हम पढ़ते ही रहते हैं, लिखाई करते नहीं, ठीक है। तो लिखाई ज़्यादा हो, पढ़ाई थोड़ी कम हो, वो इंश्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली भी। ओके, सो इसलिए बुक्स मैं कम बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि बुक्स से सिर्फ पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप लिखोगे कभी नहीं। आपको हमेशा लगेगा कि नहीं और पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन मैं लिखूँ मैं चाहता हूँ मेरा बेस्ट आंसर हो, और वो दिन कभी आता नहीं वो दिन कभी नहीं आता। वी थिंक अ लॉट दैट वी विल राइट अवर बेस्ट आंसर वन डे, and but before that we must have that best source available with us, we must have those best notes available with us. That best day never comes, okay, and trust me, best is very subjective thing. जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ तो मैं बोलता हूँ जो इंसान आपके लिए टेररिस्ट है वो किसी और के लिए फ्रीडम फाइटर है।
और जो इंसान हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है वो शायद किसी और के लिए टेररिस्ट हो। जैसे भगत सिंह हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे, बट ब्रिटिशर्स उनको टेररिस्ट बोलते थे। एनसीईआरटी में भी उनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा गया है। उसी तरह जब जो आपका बेस्ट है वो शायद किसी का वर्स्ट हो, और जो शायद किसी का बेस्ट है वो आपका वर्स्ट हो। तो ये बेस्ट और वर्स्ट के डिबेट में ना रह के इंपॉर्टेंट ये देखना है कि रेलेवेंट क्या है, इरेलीवेंट क्या है। क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट कैन नॉट बी असेस्ड, बट व्हाट कैन डेफिनेटली बी असेस्ड इज व्हाट इज रेलेवेंट टू डिमांड, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट टू द डिमांड। हो सकता है जो आपने लिखा है बहुत अच्छा है, बेस्ट है, अकेडमिक पूरा डिस्कशन है, पीएचडी के लायक है, ऑनररी टाइटल आपको मिल जाना चाहिए उसके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो इरेलीवेंट है, अगर वो पूछा ही नहीं गया तो आपको मार्क्स क्यों मिलेंगे उसके ऊपर। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड रेलेवेंट इरेलीवेंट क्या है। सो फॉर दैट क्लास इज मोर देन सफिशिएंट, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बुक्स कैन नॉट टेल यू व्हाट इज रेलेवेंट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर। अ मेंटर, अ टीचर एंड टेस्ट सीरीज एंड कंपटीशन among students can definitely tell you what is relevant, what is not relevant. Okay, so any other doubt? Thank you, sir. Last thing is, in DAMP, will you be assisting the doubts? Is there an opportunity for doubts too? And will you be checking and evaluating us? Yes, Timeless. There is a mechanism for assisting students with doubts. All the students who are going to have doubts, they can contact me anytime, because in DAMP 2, which has begun just today, DAMP 2 which has begun just today, it is going to be delivered purely in recorded mode. It is not going to be live session. Live is the DAMP 1 which began 1 month back, that is taking place every day. But DAMP 2 is just a recorded session of the DAMP 1 only. So here you can't have live interaction, but you can definitely have interaction with me over Telegram or over phone call. And when it comes to evaluation, yes, we are evaluating the papers of all the students all by ourselves, me, and there are some 2 more person along with me who are going to help students get their answers uploaded on their portal within 24 hours. Because sometimes जब students ज़्यादा होते हैं, it is impossible for me alone to check all the papers and completely upload the paper within 24 hours. मुश्किल हो जाता है, तो that is why I require a team. So total हम 3 लोग होते हैं. Sir, can we make notes for PYQ like structure for PYQ? See, Rock, you can definitely make notes for PYQ. And जैसा आपने कहा structure, it should be structured base. अगर कोई question आता है, suppose the question is how enlightenment led to emergence of sociology. आपके पास जब ये क्वेश्चन आप देखोगे, when you will see this question, आपके दिमाग में थिंकर्स नहीं आने चाहिए पहले. प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप थिंकर सोचने लग जाते हो, क्योंकि थिंकर सोचने का मतलब है अब आप डिमांड नहीं लिखने वाले, अब आप थिंकर्स के कोट लिखोगे, और वहीं से आप अलग हो जाते हो उन लोगों से जो कि थिंकर्स नहीं, डिमांड सोच रहे हैं पहले. जब आप क्वेश्चंस को नेकेड आई, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ, नेकेड आई से आप देखो, प्री कंसीव नॉलेज और बायसेस हटाकर, तो आई कैन ओनली सी वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, दैट एनलाइटनमेंट इज द कॉज एंड सोशियोलॉजी is the consequence. I can make a mind map. When I read a question, I can make a mind map, and when I have a mind map, it will help me have a good start. So instead of starting with origin of sociology, I will start with enlightenment. तो मेरे को एक इंट्रो का एक माइंड मैप मिल गया कि मुझे स्टार्ट अपने आंसर को enlightenment से करना है. अब enlightenment से करना है इतना तो मुझे काफ़ी है, बट एनलाइटनमेंट के बाद मैं क्या करूंगा उसके लिए एक स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए कि आई विल टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट, देन आई विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑन सोसाइटी, एंड देन आई विल टॉक अबाउट सम रिएक्शनरी मूवमेंट और सम रिएक्शंस टू द इम्पैक्ट. एंड वंस आई हैव अंडरस्टूड रिएक्शंस टू द इम्पैक्ट,
इनलाइटनमेंट के बहुत इम्पैक्ट थे, डिवोर्स भी हुआ था लोगों का, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े हुए थे, रेन ऑफ टेरर हुआ था, किंग्स का एग्जीक्यूशन हुआ था फैमिली का पूरा, ठीक है, लेबर स्ट्राइक्स हुई थी, सोसाइटी में मोनार्की क्वेश्चन करके एक अनार्किकल फेज आ गया था, देयर वाज लॉलेसनेस, रूलनेसनेस, जिसको डरखाइम आगे जाके एनोमी भी कहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट जो भी इम्पैक्ट हुआ समाज पे, उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस आए। पीपल डिड नॉट लाइक एनलाइटनमेंट पीरियड, दे डिड नॉट लाइक चर्च बीइंग क्वेश्चनड, they did not like state system being questioned, they did not like patriarchy being questioned, and with this reaction develops sociology. तो आपके पास अगर ये स्ट्रक्चर है, enlightenment, impact, reactions and then sociology का emergence, जो कि थोड़ा डिटेल में और आगे जाता है, इतना अगर आप अपने नोट्स में लिख रहे हो ना with PYQ, that is sufficient. You don't need to write whole answer, but you definitely need to have a structure, and each heading that you see here is going to be subheading in your answer, and that subheading should be boxed, तो ताकि विजिबिलिटी आपके एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा दिखे आपके आंसर्स में। ओके, समीर कुमार, Sir, can one do masters in social science simultaneously preparing for 2025? Yes, Sameer. But to be very honest, if you think of doing masters parallelly only for the sake of having a degree, it will not help you. It will become another BTech. जैसे बीटेक जो है वो अपने आप में सिर्फ एक डिग्री है आज की डेट में फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। लेट एमए नॉट बिकम द सेम। ओके, आई वुड से आपको जब एमए करना है आप तभी करो, या मास्टर्स करना है आप तभी करो व्हेन यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। एंड आई वुड से इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर, आप अभी से फोकस डिविएट मत करो। मास्टर्स के लिए आपके पास टाइम बहुत रहेगा, हमेशा रहेगा, उसकी कोई उम्र नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। आप जब मर्जी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो, डीयू से कर सकते हो, जेएनयू से कर सकते हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, मद्रास यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट यूपीएससी की लिमिटेशंस हैं, ये टाइम बार बार नहीं आता है। तो आई वुड से इफ़ यू डेवलप इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, डू थिंक ऑफ मास्टर्स, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू रियली वांट टू गो इनटू things like teaching or research or media, journalism or public policy research or governmental policies research organizations. Okay, at that point of time you can do masters, but not before that. Okay, so I hope I have addressed your questions. Okay, so most probably we will have one more session in the coming days about how do we go about foundation classes, उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो आई विल शो यू थ्रू सम स्लाइड्स विच वी हैव मेड। सो फाउंडेशन क्लासेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है चीज़ों को लेकर, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप पढ़ते हो सोशियोलॉजी को, और अपने सोर्सेज को, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है विद जीएस, उन चीज़ों के ऊपर में भी थोड़ा आई विल डिस्कस। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। एंड सर लिटिल अच्छा, ओके, फाइन, ठीक है। Okay guys, thank you so much.